Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, dear students, so today we will have another class of your transition 3D metals. तो आज की क्लास में we'll be talking about the oxidation states displayed by nickel and copper. इससे पहले हमने आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट का किया है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में. तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट nickel and copper, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, particularly copper. So let's begin. We'll start with the nickel. So let me take the pointer out first. तो nickel की केस में as usual सबसे पहले atomic number we should know that is 28. Electronic configuration argon 3d8 4s2. तो इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा ट्रांजिशन मेटल्स में particularly 3D सीरीज में both these 3D and 4s energy states they have similar energy, very close in energy. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन सकते हैं. तो यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है नॉर्मली 0, +2, +3 एंड +4, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जब आप 0 कहेंगे इट मीन्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, कार्बोनिल कंपाउंड्स कि कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा. मैंने से +2, सो बोथ द s इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिमूव्ड. When I say +3, so 2 s electrons or 1 electron from D8 will get removed. And in case of 4 +4, so 2 electrons from S and 2 electrons from D are removed. Now, इनमें से सबसे important है that is +2 and +3. इनमें से भी +2 is the most common जो आप कंपाउंड देखते हैं. एग्जाम्पल्स जैसे मैंने भी कहा कि निकल 0 के लिए बड़ा आसान है. टेट्राकार्बोनिल निकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेटलर्जी है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है. जैसे निकल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय मॉन्डस प्रोसेस, तो इसमें भी ये कंपाउंड बनता है. तो निकल टेट्राकार्बोनिल या टेट्राकार्बोनिल निकल. +2 के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप याद रख सकते हो निकल सल्फेट, इट्स वेरी इजी, या निकल DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीन का कंपाउंड आप याद रख सकते हो. पर +3 you can remember this nickel oxide example, and for +4 nickel dioxide, or you can take also the nickel hexafluoride example. अब nickel +2 is the most stable oxidation state. इसमें सिंपल जो आंसर आप यही याद रख सकते हो कि जो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल +3 +4, उनमें you require more energy to ionize, while as for +2 you require less energy to ionize. So that is why this oxidation state is the most stable, यानी इसके ज़्यादा कंपाउंड्स आपको मिलते हैं +2 के, because it's easy to remove 2 electrons from the nickel atom. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन द निकल. इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज वी शुड रिमेंबर. इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी के आसपास क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी एंड देन द सम एग्जाम्पल्स. सो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं 3D में जिनका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर द क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम एनी एग्जाम इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिटिव. कॉपर सबसे पहले वी नो इट्स एटॉमिक नंबर 29. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गॉन 3d10 4s1. सो यहाँ पे क्या बेसिकली इट इज 3d9 बट 1 इट्स anomalous behavior. 1 s electron comes here, so it becomes 3d10. So it's an example of anomalous. So it can show oxidation states normally that is +1 and +2. यानी जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं निकल की, so normally जो oxidation states हमें दिखते हैं सबसे ज़्यादा +1 and +2. Now among these +1 and +2 is more stable. ये हम आगे देखेंगे. जो compounds where copper has +1 oxidation state, now such compounds are called as cuprous compounds. हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया ये कॉन्सेप्ट क्यूप्रस एंड आइस एंड ई कॉन्सेप्ट. लाइकली दोज कंपाउंड्स वेयर द कॉपर हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे आर कॉल्ड एज क्यूप्रिक कंपाउंड्स. क्यों? ये +2 इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम आएगा सफिक्स में IC, एंड क्यूप्रस इट इज +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो विल ऐड सफिक्स OUS. जैसे हमने लास्ट में कहा था फेरिक फेरस, लाइकली स्टैनिक स्टैनस. सो दिस नॉमेनक्लेचर यू कैन रिमेंबर. So if you have +1 oxidation state, तो obviously आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, and if it's +2, so you are removing electron from here.
Now most of the cuprous compound that is plus one oxidation state, ये क्या होते हैं, they are usually diamagnetic. क्यों? क्योंकि this जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, now your all the d orbitals जो है they are completely filled, you don't have any unpaired electron, so this is diamagnetic. दूसरा they are colorless, ये transition possible नहीं है, ठीक है. So and then examples you can take out copper sulfide, copper iodide, tetracyano copper complex, or cuprous chloride. So you can take an example. You can remember any example, or cuprous oxide also you can remember. Now talking about the Cu2 plus compounds. Now most of the anhydrous cupric compounds में एक important चीज ये है, they can be hydrated and they can be anhydrous. जो anhydrous होते हैं जिसमें water participate नहीं करता है bonding में, यानी water is not acting as a ligand in the complex formation, such compounds are colorless, while as the hydrated cupric compounds they are blue in color. ये बहुत important है. क्यों? Because they form blue hydrated complex, this one, or you can say they form this hexaecho cupric complex. इस कंपाउंड में होता है ब्लू कलर. So that is why the जो आपका anhydrous copper sulfate होता है लैब में, it's white in color, while as जो आपका hydrated copper sulfate है that is blue in color, क्योंकि इसके साथ 5 molecules of water होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है. So this is blue in color, while as that compound is not colored. So the cupric compound Cu, यानी D9 state जो है they are colorless, but if it is hydrated, so it becomes blue in color. Example, copper hexaecho complex you can remember, या ये भी आप remember कर सकते हो tetraamine copper complex, tetraamine copper sulfate. नहीं, इसी compound को आप अगर आप अमोनिया ऐड करेंगे तो then you will get this compound tetraamine copper sulfate. इसका भी deep blue color होता है, ठीक है. Now moving to the next point, the compounds of copper plus 1 they are unstable in aqueous solution, since they disproportionate to form plus 2. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कहा कि among the plus 1 and plus 2 states, जो आपका plus 2 है this is highly stable in aqueous solution then plus 1. तो अगर आपने copper cuprous salt लिया, सॉरी cuprous salt for example CuS, या कोई भी cuprous iodide, कोई भी cuprous salt, जब when we dissolved this in the solution it gives cupric ion, it gives this Cu plus 1, लेकिन immediately आप देखेंगे this gets converted to plus 2. Q as per this relationship, because plus 2 is more stable. So this copper plus cuprous ion will get converted to cupric and copper metal. That means one of the cuprous ion takes the electron from the other cuprous ion to form copper metal. So this is your reduction. Other copper ion, cuprous ion, it forms copper plus 2 by the loss of electrons, so it undergoes oxidation. So this is called self-oxidation and self-reduction. Self-reduction and this is self-oxidation. It's called disproportionation. So the copper plus 1 are the cuprous salts of, and cuprous salts, when they are in the aqueous solution, they will disproportionate to form cupric and copper metal. So why are copper 2 plus compounds, why are cupric compounds stable? Why plus 2 oxidation state stable? Because this state में it has high enthalpy of hydration. So this is the short answer for this. Enthalpy of hydration means when the water molecules they coordinate or they form the hydrated shell with a particular metal, then during this hydration amount of energy is released. Since a lot of energy is released in case of hydration of cupric ion, so this is more stable than your cuprous ion. So ये कुछ important information है about the oxidation states of copper. ये बहुत important, इसमें always question आते हैं. And then the oxidation states displayed by nickel. So this is all about our oxidation states का जो हमारा topic था transition metals में. इसके साथ साथ में मैंने इस पे भी you will always download the note will be there. आप इस note को इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use it for the exam purpose. Go to the description and you will check the link there, download it and you can use it. So this is all for the day, and inshallah the next will come up with some complex compounds and their properties. So thank you.